Saturday Talk. Today we are privileged to have Kapil Naik ji with us, and he is going to speak with us about this Kashmir and its propaganda, the facts what he wants to put across in front of us. Shri Kapil Naik ji is associated with Jammu Kashmir Study Center, that is JKSC, since last 5 years, and his core involvement is in the research over Kashmir, Pakistan and terrorism. He's also actively involved in the social service, and that is how we got in contact with him when we had one taluka level quiz competition organized here in Vasai on the Kashmir Vilay Divas, which was headed by our Abhimanyu sir. That is how we came in contact with us. And Kapil ji, over to you. We are looking forward to hear from you on this subject, which is quite a different subject for us, being a technology company. And this is going to be a session of 1 hour. Out of that, 45 minutes will be your address, and last 5 to 10 minutes we'll have for questions and answers. Over to you, Kapil. So when Abhimanyu ji approached me to speak on Jammu and Kashmir, and the time is 45 minutes, there were two thoughts in my mind. One is I immediately accepted the invitation. That's number one. And number two is, how do we arrange a speech on Jammu and Kashmir, a matter which is so complex and so vast? How do we arrange that speech in 45 minutes? Because when we speak of Jammu and Kashmir, like any other state, if I have to write a book on Jammu and Kashmir, probably it will be 500 pages book, because then you will cover the linguistic part, the historical part, the cultural part, the economy, the political history, the British India, and so many aspects, the legal part, the constitutional part, so many aspects to be covered. And to pack them in 45 minutes, it's a challenge. Number one challenge is the challenge for me to present the case. And number two challenge is for the listener to absorb what I'm saying. So what I've done for today's session is, I'm going to speak on Kashmir and associated propaganda, especially the propaganda which revolves around all the myths and a bunch of lies that have been sold to us for last 75 years. So I'm going to speak in 3 sessions. Session 1, I'll speak about 1947 and the developments of 1947 which led to accession of Jammu and Kashmir. Then I'm going to speak on the plebiscite, on the myth of plebiscite that is being sold to us, and how easily and casually there are many in and outside India, they speak about the so-called plebiscite. So that is a myth I want to destroy. And number 3 is, then I will speak about the Article 370 and Article 35A and how it is being made inoperative. So I'm going to cover this in 3 sessions. So session 1 of what I'm going to speak, or the part 1 of what I'm going to speak, is the development of 1947, because that forms premise for the next 2 topics. Maharaja Hari Singh, as we know, he was head of the princely state of Jammu, Kashmir and Ladakh. And the Government of India Act 1935 and the Indian Independence Act 1947, it was very clear that ruler of the princely state alone shall decide about the accession. इसका मतलब ये है कि अगर 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो हर एक प्रिंसली स्टेट्स का रूलर ये डिसाइड करेगा कि हमें एक्सेशन हिंदुस्तान के साथ करना है, डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ करना है, या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के साथ करना है. The right of taking that decision was absolutely with ruler of the state. So Government of India Act and Indian Independence Act 1947, it is crystal clear, if it read together, that the power of accession lies with the ruler, and the power of accession for Jammu and Kashmir, eventually it lies with the head of the state, the ruler of the state, Maharaja Shri Hari Singh ji. Now for Maharaja to take up this decision, I'll put up a certain background to this, that how he was influenced by 5 to 6 opinions. I'll start with father of the nation, Mahatma Gandhi. Jammu Kashmir at that point of time had its own prime minister. It also had its own constitution in place, and it also had its own prime minister. The name of the prime minister was Meher Chand Mahajan. Later on, he went on to become the Chief Justice of India. Meher Chand Mahajan was appointed as Prime Minister of Jammu and Kashmir on 15th of October 1947, which is after 15th of August 1947. Meher Chand Mahajan, in his book Looking Back, he clearly mentions all the conversations Maharaja had with all the 6 people which I am going to mention. सबसे पहले बात करते हैं father of the nation, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi took a position on Jammu and Kashmir. In his conversation with Meher Chand Mahajan, the position was this: there is no hurry to accede. Imagine 15 August हो चुका है. We are in August. 2 महीने निकल चुके हैं. And yet, father of the nation says that we are in no hurry. You take the best decision and advise Maharaja Hari Singh, who is the head of the state. तो Prime Minister कौन है? Meher Chand Mahajan.
Head of the state कौन है? Maharaja Hari Singh. Gandhi ji says you take your time and advise, give your best advice to head of the state. In a way, Mahatma Gandhi stood neutral. What was the position of Sardar Patel? It was crystal clear he wanted Jammu and Kashmir to accede to India, to dominion of India. Number 3, let's talk about Pandit Nehru. Pandit Nehru ji ki position ye thi, we can discuss about accession to India, but first the power be handed over to Sheikh Abdullah, who was leader of political party National Conference. So it was a conditional approval that we do not want accession to happen with Maharaja being the head of the state or the power given to Maharaja. We want the transfer of power to happen and that power be given to Sheikh Abdullah. Nehru's interest was not accession. His interest was let the power be given to Sheikh Abdullah and then we'll think of accession. So it was a condition. There was a condition to it. So these are the 3 different positions of Gandhi, Nehru and Patel as communicated to Meher Chand Mahajan in 1947. There was also one gentleman called Mr. Kak, who was a Kashmiri Pandit and advisor to Maharaja, who was advising that Maharaja should stay independent. But anyway, which is not a legal position because the Government of India Act 1935, read along with Indian Independence Act 1947, gives only 2 options, that you either accede to dominion of India or you accede to dominion of Pakistan. There is no third option. And there was one more condition to accession, that the condition of land continuity, the geographical continuity of the dominion. So if Baluchistan wanted to accede to India, there was no geographical continuity, so it can't accede to dominion of India. If Nizam of Hyderabad wanted to accede to Pakistan, yes, the act gives him freedom to decide, but the act also says that there has to be geographical continuity. There is an and gate, it's not an or gate. And hence Nizam of Hyderabad, although he had the right to decide, but he had no right to accede to Pakistan. But because princely state of Jammu and Kashmir was a border state, he had got freedom to decide, because he has got land continuity with India and Pakistan both, he had got freedom to decide which way to go. Then comes the number 5 character in this whole thing, and that is Lord Mountbatten. Lord Mountbatten was absolutely crystal clear. 5th person, 5th opinion. It was absolutely crystal clear that J&K should accede to Pakistan because that was the interest of the British intelligence, and that was also the interest of British Empire, that J&K should accede to Pakistan. He was very clear. Now comes the character number 6, which I would call, if there is an Oxford dictionary and we want to substitute the word betrayal, I would use this person's name, and his name is Barrister Jinnah. He not only betrayed Baluchistan, which is a separate topic and I don't want to stretch it here, he also betrayed Jammu and Kashmir. Jinnah was very clear that he wanted Jammu and Kashmir, but he started like a friend, like a male lover, how he would cajole a female lover. He started talking to Maharaja Hari Singh ji in a very sweet language, that you are a Muslim dominated princely state, that you should accede to India. When that didn't work, Jinnah opted for option number 2, step number 2. He put an economic blockade on Jammu and Kashmir. So that was step number 2. What was this economic blockade? All the essential commodities were blocked from either entering Jammu and Kashmir or exiting Jammu and Kashmir, like medical supplies, food, oil, all the supplies were blocked. At that point of time, major connectivity of Jammu and Kashmir was through either Rawalpindi or Sialkot, and unfortunately both of them, they went to Pakistan, and this economic blockade was imposed. Despite this economic blockade, when Maharaja Hari Singh ji did not sign the instrument of accession in favor of Pakistan, what Jinnah did, he sent his personal secretary. There was one gentleman called Major Shah, who was, I think, son-in-law of Justice in Lahore High Court. He was sent here in India. एक हाथ में धमकी थी और दूसरे हाथ में instrument of accession था. Meher Chand Mahajan clearly said, first you lift economic blockade and then we can talk. Major Shah refused to kind of lift the economic blockade, and instead he said that you come to Pakistan, you come to Karachi and have a discussion with Barrister Jinnah. Meher Chand Mahajan had clear understanding what this invitation means, and he refused the invitation to come to Pakistan. Option 3 failed. Mr. Jinnah then went ahead. From how you can see how from non-violent friendly means, in no span of time, Jinnah went to bloodiest of violent means. Option number 4,
Jinnah started radicalization, instead of radicalization, I should use the word, he increased the communal tension on the borders of Jammu district. There were rapes, there were mass killings, the houses were burnt down, and Jammu was burning. So from a hand of friendship, he started burning Jammu. The idea of economic blockade was that the people would rise against Maharaja and say, hey, look, the prices are going up. We don't have the essential. Let's accede to Pakistan. When that didn't work, he started burning down Jammu. Merchant Mahajan's books also mentions that there was a mosque in Jammu where people where the people from Muslim community, they gathered and they were firing on Hindu people who were walking around. Jinnah then decided to kidnap Maharaja. For the benefit of the audience, I'll also tell you, Jinnah ने Khan of Kalat को भी kidnap करके बलूचिस्तान का accession किया है. बलूचिस्तान का accession जो है, वो बलूचिस्तान के ऊपर attack करके हुआ है. And same was the strategy with Jammu and Kashmir. They wanted to kidnap Maharaja on the night of 21st October 1947 in a place called Bhambir. There was a dark bungalow, and as I said, Maharaja was on a 5-day visit to Jammu. And his plan was to be in this dark bungalow on 21st night. When Jinnah got wind of this, they said, let's kidnap this gentleman. Somehow Maharaja, I do not know whether it was his instinct or what, or his intelligence, Maharaja cancelled his Kathua visit and said, we are going to Bhambir during the daytime. Merchant Mahajan said, all the dignitaries are waiting. We cannot go to, we can't drop Kathua and go to Bhambir dark bungalow because that's not the plan. Maharaja said, I am the Maharaja, I decide the plan. And he went to Bhambir during the daytime. He had a lunch there. He gave instructions and he came back to Jammu. Imagine on the night of 21st, the dark bungalow was burned down. Maharaja survived this kidnapping on 21st. If he was kidnapped on that day, he somehow miraculously survived. J&K would have been with Pakistan on 21st night. When the plan of kidnapping also did not work, I think Jinnah went to his last 6th or 7th plan. This was, okay, not last, but the last one, he attacked Kashmir. And on 23rd and 24th, they reached up to Baramulla. By 26th, I think they reached up to Baramulla. And the distance between Baramulla and Kashmir is, I think, about 35 kilometers of flat road. Imagine, while all this happening, what was Indian establishment doing? Indian establishment, Mr. Nehru was saying, accession is okay, but first let the power be handed over to Sheikh Abdullah. Log mar rahe hain, kat rahe hain, sab theek hai. We will accept accession, we'll discuss accession when the power be handed over to Sheikh Abdullah. All this while this is happening, there was no response. The Deputy Prime Minister of Kashmir, Jammu and Kashmir and Ladakh was sent to Delhi to get the military help, but there was no response. Smartly, Sheikh Abdullah ji left Jammu and Kashmir and went to Delhi on 25th night, and it is believed that he was staying in the residence of the then Prime Minister, Mr. Pandit Nehru. On 26th morning, when all this is happening, on 26th morning, Justice Merchant Mahajan, who was then the Prime Minister, he took flight from Jammu along with VP Menon and went to see Pandit Jawaharlal Nehru. And then he said this, please take whatever you want to. I have signed instrument of accession from Maharaja Hari Singh. Give us the military aid. I do not know. Mr. Pandit Nehru shouted in his books. I think Justice has given the details. He shouted and say, get out, leave Mr. Mahajan. When army is 35, Pakistan army is 35 kilometers from Srinagar, what is our establishment saying? Leave Mr. Mahajan. It is believed that Sheikh Abdullah was in the same house standing behind a curtain, and he passed a paper slip to Pandit Nehru, and Pandit Nehru, after reading that paper slip, immediately changed his mind and said, okay, we accept the accession. Now this whole thing was played very smartly by Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah and Jinnah, they had no love in between them. They shared a stage in 1946 or something, but they had no love between them. Jinnah did not like Sheikh Abdullah and Sheikh Abdullah did not like Jinnah. Sheikh Abdullah immediately understood, if the accession is not signed, J&K goes to Pakistan. And once it is gone to Pakistan, I have no role in J&K. His dreams of becoming Prime Minister of J&K are vanished if J&K goes to Pakistan. His dream is intact if J&K remains with India, because he can convince Pandit Nehru, but he cannot convince Barrister Jinnah. So he said, let's accept the accession signed by Maharaja Hari Singh. This way, instrument of accession was accepted. Lord Mountbatten acknowledged this instrument of accession, and Jammu and Kashmir became integral part of India.
Now, Article 370, which I'm going to say in part number 3, it came in much later. It came in 2 years after 1947. So now that instrument of accession was signed and it became part of Dominion of India, completely became part of Dominion of India, I will go to the second topic of plebiscite. This is favorite topic of all the separatist and so-called mainstream media who really, I do not know if I should say this, but probably they would be happy if India breaks. Now, let me say this with full responsibility that on 1st of January 1948, now I've moved to part 2 of my speech, then on 1st of January 1948, India went to United Nations and they made a complaint. But the topic of plebiscite did not come in then. The topic of plebiscite first came in 30 September 1947, when Indian cabinet led by Prime Minister Nehru, they said that, there is a suggestion, there could be a suggestion in future that India got accession of JNK done when JNK was under attack and it was not a free accession. Now, who was suggesting? Pakistan was not suggesting. Nobody was suggesting. The Government of India Act 1935 does not, or Indian Independence Act 1947, it does not make it mandatory. The plebiscite is not a mandatory tool. 35 doesn't make it mandatory. 47 doesn't make it mandatory. Instrument of accession is not conditional. Then on what ground the cabinet says that we will conduct a plebiscite? Now, let me tell you this. There was no parliament bill. There was no parliament enactment. There was no presidential order. There was no notification. Statement of a prime minister is not a legal document. And if prime minister on any podium, be it United Nations or India, says that we will conduct a plebiscite, let me tell you a legal term. अगर यहाँ पे जिन्होंने law पढ़ा है वो present है. It is called ultra virus. That you are acting beyond your powers. Nobody in India had the powers to say that we will conduct a plebiscite because the plebiscite itself was illegal. Plebiscite, Government of India Act 1935 and Indian Independence Act 1947 plebiscite की बात नहीं करता है. ये दोनों एक्ट ये बात नहीं करता है कि प्रिंसली स्टेट का एक्सेशन प्लेबिसाइट से होना चाहिए. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहीं पे भी नहीं कहता कि प्लेबिसाइट होनी चाहिए. तो सबसे पहले प्लेबिसाइट एक इलीगल कॉन्सेप्ट है. पॉइंट नंबर 1, इट्स अ इलीगल कॉन्सेप्ट. देयर इज नो लॉ व्हिच सेज दैट देयर हैज टू बी प्लेबिसाइट. एंड अ स्टेटमेंट, किसी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता. अगर आज के प्रधानमंत्री भी कोई ऐसा स्टेटमेंट कर दे जो इलीगल है तो वो कोई लॉ नहीं होता. That doesn't become a legal document. वो कोई हिंदुस्तान का लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसे हिंदुस्तान को फॉलो करना है. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्सेप्ट किया गया तब स्मार्टली लॉर्ड माउंटबैटन आल्सो रोट अ कमेंट ऑफ प्लेबिसाइट. नाउ BBC and New York Times, they keep us calling us banana republic. I want to ask the then Governor General of Lord Mountbatten, under which powers and authority conferred to him by His Majesty, he is using the word plebiscite. So it was ultra vires for Lord Mountbatten. It was ultra vires for Pandit Nehru to say that there'll be plebiscite. Now I have a 10-point question to destroy this plebiscite thing forever. Point number 1, does the India Independence Act 1947 mentions plebiscite? Answer, no. Did Lord Mountbatten have the jurisdiction and the power to mention plebiscite as conferred by His Majesty in England? Answer, no. Is there any parliament resolution, bill, act which speaks about plebiscite? Answer, no. Has Barrister Jinnah ever said, imagine this, ये पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा plebiscite. Can you beat that? Has Barrister Jinnah ने कभी कहा कि plebiscite होना चाहिए? Answer, no. पाकिस्तान का constitution mentions पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड साइबर कप्तानवाला. वो तो कश्मीर की बात भी नहीं करता है preamble of the Pakistan constitution. Does it mention? Answer, no. क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ट्रिब्यूनल है जो डिसाइड कर सकता है पॉलिटिकल इक्वेशन? आंसर, नो. क्या होता है प्लेबिसाइट? दैट्स द क्वेश्चन. प्लेबिसाइट का सिंपल भाषा में वर्ड ये है, प्लेबिसाइट का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक वोटर को जाके पूछो कि आप कहां पे जाना चाहते हो. ये प्लेबिसाइट का मतलब नहीं है. प्लेबिसाइट का एक मतलब ये भी है कि जो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
वो रेटिफाई करे, वो कंफर्म करे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फाइनल है। सबसे पहले प्लेबिसाइट एक इलीगल टर्मिनोलॉजी है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3547 मेंशन नहीं करता। दूसरी बात, किसी के पास भी ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, ना लॉर्ड माउंटबेटन, ना पंडित नेहरू जी, ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई ट्रिब्यूनल है जो इस प्लेबिसाइट की बात करे। और अगर मैं एक सेकंड के लिए मान भी लूं कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, तो प्लेबिसाइट हुआ 1954 में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर थी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने रेटिफाई किया है दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज फाइनल एंड जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 9, ये प्लेबिसाइट की कंडीशंस क्या थी? प्लेबिसाइट की कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान जो है, जिसे अपनी आर्मी जो है वो एलओसी से, लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे लेके इंटरनेशनल बॉर्डर तक जानी पड़ेगी। आज तक पाकिस्तान ने एक सोल्जर नहीं हटाया। वहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के ऊपर उनका चीफ मिनिस्टर बैठा है, उनकी असेंबली बैठी है। तो जो पाकिस्तान ने कंडीशन फुलफिल नहीं की है प्लेबिसाइट की, वो बात करते हैं प्लेबिसाइट की। सबसे पहले, एज आई सेड, प्लेबिसाइट इज इलीगल। किसी के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो प्लेबिसाइट की बात करे। और ये सब कुछ रूल आउट करके अगर मैं कहता हूं कि चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मैं कहूं कि प्लेबिसाइट करते हैं, तो हिंदुस्तान ने प्लेबिसाइट किया है 1954 फरवरी में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये माना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फाइनल है और इट इज रेटिफाइड। अब मैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की कंप्लेंट की बात करता हूं बिफोर आई क्लोज सेशन नंबर 2। 1 जनवरी को हमने कंप्लीट की। देखिए, ये मजाक है, ये कोई मजाक है कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर 35 क्या कहता है कि जो मेंबर है वो यूनाइटेड नेशंस के पास आ सकता है अगर उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है। आप उस कंप्लेंट को, 1 जनवरी की कंप्लेंट को ठीक से पढ़िए। पंडित नेहरू जी खुद कह रहे हैं कि हमने उनको बारामुल्ला से एलओसी तक पीछे ढकेल दिया है। दे हैव बीन पुश्ड बैक। एंड देन in the same point पंडित नेहरू जी admits और the government of India admits, अगर जरूरत पड़े तो हम पाकिस्तान में एंट्री करेंगे। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है that you can enter Pakistan, how can in para 1 say that I am endangered and hence approaching you on Charter 35 of the United Nations? How can in a war a winning side be endangered side? How can एक जंग में जो जीतने वाले हैं वो खतरे में कैसे हो सकते हैं? ये क्या किसी की मजबूरी थी कि एक जीतने वाली जंग को रोक के हम यूनाइटेड नेशंस के पास खुद जाके बोल रहे हैं कि हम प्लेबिसाइट लेंगे, जो एक इलीगल एक्टिविटी है। ये प्लेबिसाइट करने का अधिकार ना माउंटबेटन को है, या यूएनएससी को है, ना हिंदुस्तान को है। और पाकिस्तान इज नॉट पार्टी टू दिस। क्या पाकिस्तान कहेगा कि बलूचिस्तान के इलेक्शन यूएन रिप्रेजेंटेटिव के अंडर होने चाहिए? मैं कभी नहीं कहेगा। पाकिस्तान की कोई, जैसे लीगल लैंग्वेज में कहूंगा, कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है कि वो प्लेबिसाइट के बारे में बात करें। ये 10 पॉइंट में साफ शब्दों में कहता हूं कि अगर कोई इन 10 सवालों के, ये रिकॉर्डेड सेशन है, अगर इन 10 सवालों के कोई जवाब देता है, तो ये जो पूरी लेफ्टिस्ट लॉबी हिंदुस्तान में चल रही है और ये जो कहती है कि प्लेबिसाइट, नंबर 1, इट्स इलीगल डिमांड। नंबर 2, nobody has got the authority and power as per the law to decide plebiscite. And number 3, even if I say for a second कि plebiscite होना चाहिए, तो India has done it. In 1954, the Constituent Assembly has approved and ratified instrument of accession. 24 February 1994, याद रखिएगा इस डेट को, 24 फरवरी 1994। और तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड रेजोल्यूशन पास किया है दैट वी विल टेक बैक पीओजेके बाय ऑल मींस, एंड इट सेज इट इज वॉइस ऑफ द नेशन। और इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये रेजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट का 1994 का, ये यूनानिमसली वोट किया गया अक्रॉस ऑल पार्टीज। सभी सांसदों ने इसके फेवर में वोट किया है। तो आप, मैं, जो भी 35 लोग इस कॉल में हैं, वी आर पार्टी टू दिस रेजोल्यूशन दैट पीओजेके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। Now I will come to Article 370, the Part 3 of it. Article 370 2 साल बाद आया 1947 की, और इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949, उससे भी मैं थोड़े पहले जाता हूं। शेख अब्दुल्ला
जी चाहते थे कि आर्टिकल, तब ये आर्टिकल 370 नहीं था, इसका नंबर था 306 कैपिटल ए। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन में रीनंबरिंग हुई तब ये आर्टिकल बना 370। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि ये आर्टिकल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाए। शेख अब्दुल्ला जी नेहरू जी के पास गए, नेहरू जी ने कहा कि लॉ मिनिस्टर तो डॉक्टर अंबेडकर हैं और आप उनके पास जाइए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, मेरी स्पीच में यहां पे रोकूंगा और एक बुक को रिफर करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई पैराफ्रेजिंग हो, मैं डॉक्टर अंबेडकर के वर्ड्स एज इट इज पढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर सेड दिस टू शेख अब्दुल्ला ऑन आर्टिकल 306 जो बाद में जाके 370 बना। यू वांट दैट इंडिया शुड प्रोटेक्ट कश्मीर and Kashmiris should enjoy equal right in the whole of India, but you don't want to give any right to India and Indians in Kashmir. I am law minister of India, I cannot betray my nation. डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 370 को बिट्रेयल कहा है, डिसीट कहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये कोई पैराफ्रेजिंग नहीं हो रही बिकॉज आई एम गिविंग यू स्पीच। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं, इट इज बिट्रेयल टू द नेशन। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर वाज लीडिंग दैट कमिटी व्हिच ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही रिफ्यूज्ड कि मैं इसे इंक्लूड नहीं करूंगा, हमारी कमिटी इसे इंक्लूड नहीं करेगी। देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्लेस जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने वाली थी। 17 अक्टूबर को, ध्यान दीजिए, 17 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर थे, ही सेड लेट्स अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द फाइनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स अडॉप्ट द प्रियम्बल। इतना लेट जब प्रियम्बल अडॉप्ट करने की बारी आ गई तब एक जेंटलमैन खड़े हो गए, गोपाल स्वामी अयंगार जो कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर थे। He said that one article is pending. President said, which article? He said article 306 capital A. Even if one article is pending, आप preamble accept नहीं कर सकते in constituent assembly. आर्टिकल 370 किसने लाया? कश्मीर ने नहीं लाया, महाराजा हरि सिंह ने नहीं लाया, शेख अब्दुल्ला ने नहीं लाया, कश्मीर की जनता ने नहीं लाया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया। तो आज जो लोग बातें करते हैं उमर अब्दुल्ला दैट वी एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 370, मेरा एक ही रिप्लाई है उमर अब्दुल्ला को, भाई साहब थोड़ा लॉ पढ़िए, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़िए, यू आर नॉट पार्टी टू दिस डिसीजन। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लाया था। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जम्मू कश्मीर के 4 रिप्रेजेंटेटिव थे जिसमें से एक शेख अब्दुल्ला थे, इनके ग्रैंडफादर। ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड ऑन टू इट। इसमें सिर्फ 2 लोगों ने बात की, गोपाल स्वामी अय्यर। बाय द वे, Congress working committee was not in favor of this article. Ambedkar was not in favor of this article. There was no debate on this article. It was all whims and fancies of one person at the time who was the leader of the nation. To satisfy him, Sardar Patel said, we have to do it for him. जब एक लीडर चाहता है कि ये आर्टिकल आ जाए, ऑन द लास्ट डे जब प्रियम्बल एक्सेप्ट होने वाला है, ये आर्टिकल टेबल होता है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। गोपाल स्वामी अयंगार खुद कहते हैं कि आर्टिकल टेम्पररी है, ट्रांजिशनल है। तब एक अवध के एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक मोहानी करके, मौलाना मोहानी उनको बोलते थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने पूछा कि भैया ये आर्टिकल क्यों, व्हाई सेपरेट ट्रीटमेंट टू जम्मू एंड कश्मीर। दैट टाइम गोपाल स्वामी अयंगार सेड कि देयर आर स्पेशल सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या कहा उन्होंने? देयर इज वॉर इन जम्मू एंड कश्मीर गोइंग ऑन, एनिमी, ही कॉल्ड पाकिस्तान एनिमी, enemy has not withdrawn from line of control. So Indian constitution को जम्मू एंड कश्मीर को extend करने के लिए there is no mechanism. There is no mechanism. So how do we do it? So we need a temporary mechanism by which we will extend the provisions of Indian constitution to article 370. That's all. और इसमें पावर दी गई क्लॉज 1 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू टेक अ ऑर्डर, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इसमें पावर दी गई कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो एक्सटेंड किए जाए जम्मू एंड कश्मीर को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये 370 एक्सेप्ट किया गया तब इसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि यहां पे कौन रह सकता है, कौन जॉब कर सकता है। आर्टिकल 370 ने कोई डिस्क्रिमिनेशन मेंशन नहीं किया था। इट वाज जस्ट अ प्रोविजन दैट विद अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, क्योंकि वहां के हालात अभी खराब है और ये टेम्पररी है। और ये कितना टेम्पररी है, आर्टिकल 370 खुद कहता है इन क्लॉज नंबर 3 कि अगर ये टेम्पररी है तो इसे खारिज करना पड़ेगा। तो अगर इसे इनऑपरेटिव करना है, आर्टिकल 370 ये दुनिया का अकेला आर्टिकल है जो
जो ये प्रोवाइड करता है कि मुझे कैंसिल कैसे करेगा। आर्टिकल 370 करता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विद अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस आर्टिकल कैन बी मेड इनऑपरेटिव। उसको पार्लियामेंट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, ये इतना टेम्पररी है। जो चीज इतनी टेम्पररी है वो 70 साल कैसे टिक सकती है। आर्टिकल 370 डेडली कहां हुआ, आई विल कवर इन लास्ट 5 मिनट्स ऑफ माई स्पीच। आर्टिकल 370 में, जिसमें क्लॉज 1 में पावर्स दिए थे प्रेसिडेंट को, हम हमेशा कहते हैं कि प्रेसिडेंट तो एक साइनिंग अथॉरिटी है, काफी लोग यूं मजाक उड़ा देंगे, ये तो एक साइनिंग अथॉरिटी। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ा है उन्हें समझ में आएगा कि हाउ पावरफुल अ प्रेसिडेंट इज। इसके बाद कई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स निकले, एक 1950 में निकला, 54 में निकला, मेरे ख्याल से 62 में निकला, 64 में निकला। जो 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, ये सबसे खतरनाक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, एंड वॉट एवर मेस वी हैड इन जम्मू एंड कश्मीर वाज बिकॉज ऑफ दिस 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। क्या था ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर? ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने एक आर्टिकल को, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, आर्टिकल 35A is the biggest fraud in Indian history, constitutional fraud in Indian history. Article 370 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को JNK में अप्लाई करें। इट सिंपली मीन्स, मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज अप्लाई प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू JNK. It does not mean that you have to add articles in original Indian constitution. How can anyone in India use powers of Article 370 and insert Article 35A in Indian constitution? देखिए, जो चोरी करते हैं ना, वो रात को करते हैं अंधेरे में। ये आर्टिकल 335A बेयर एक्ट में इंट्रोड्यूस नहीं करवा दिया गया ताकि पूरी जनता पढ़े, इसको पीछे अपेंडिक्स में डाला गया। It was not inserted between the place between Article 35 and 36. It was placed in the appendix. Article 370 clearly speaks of two words, modifications and exception. It does not give power to president to add article to Indian constitution. And this happened in 1954. I would say this was broad daylight murder of democracy. I would say this was broad daylight constitutional fraud. कई सारे आर्टिकल को टच किया गया। अगर आपको आर्टिकल 35A और 370 समझना है, अगर किसी स्टेट को, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पॉपुलेशन को अपनी स्टेट से निकाल देना है, इससे बड़ा बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता। आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट्स है, वो अप्लाई नहीं हो सकता JNK में। 35A ये कहता है, इट गिव्स अ स्टेटस ऑफ PRC। ठीक है, PRC में तो कोई गलत बात नहीं है, हर एक स्टेट का अपना एक डोमिसाइल होता है। प्रॉब्लम PRC में नहीं है, प्रॉब्लम उसके आगे आती है। क्या डिफाइन होता है? हु आर रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो 1944 से पहले आ गए। पार्टीशन कब हो गई? 1947। किसी ये आप ये समझिए कि ये हिंदू पॉपुलेशन को PRC न देने का बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि जो भी नॉन हिंदूज थे वो 1944 तक जम्मू कश्मीर में आ चुके थे। पार्टीशन के टाइम जो हिंदुस्तान में आए वो मेजरली हिंदू पॉपुलेशन थी। इसीलिए आर्टिकल 35A ने ये मेंशन कर दिया कि PRC उनको मिलेगा जो 44 में हिंदुस्तान में आ चुके हैं। जो लोग हिंदुस्तान में 44 के बाद आए ऑन अकाउंट ऑफ पार्टीशन, उनको PRC नहीं मिलेगा, एंड दैट पॉपुलेशन इज समवेयर क्लोज टू टुडे आई थिंक मोर देन 5 लाख। इमेजिन आप हिंदुस्तान के सिटीजन हो लेकिन स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो, ये कैसा बड़ा फ्रॉड है। और तो और ये स्टेट सब्जेक्ट जो नहीं है, इन्हें पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करना, पर्पस ऑफ रेसिडेंस डिसाइड करना, पर्पस ऑफ एजुकेशन डिसाइड करना, ये राइट किसको है? स्टेट को है। आज अगर मुझे यूपी में एजुकेशन लेनी है तो मैं ले सकता हूं। कहीं यूपी के लोग महाराष्ट्र में जॉब के लिए आते हैं, लेकिन ये कहना कि स्टेट डिसाइड करेगा यहां पे कौन काम करेगा। लाइफ के देखो 3 फेजेस होते हैं, आप मानते हो? एजुकेशन, जॉब और घर। एक इंसान से आप ये तीनों फेजेस छीन लेते हो। आप क्या चाहते हो? कि वो इंसान आपका स्टेट छोड़ के चला जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड के साथ एक रिलीजियस फ्रॉड भी है। ये एक जेंडर, आर्टिकल 35 एक जेंडर बायस भी था। अगर जम्मू कश्मीर का लड़का किसी दिल्ली की लड़की के साथ शादी करता है तो उसका PRC इंटैक्ट है। अगर लड़की शादी करती है दिल्ली के लड़के के साथ तो उसका PRC चला जाता है। ये कास्ट बायस है, ये जेंडर बायस है, ये पॉलिटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास, अगेन अल्ट्रा वायरस, प्रेसिडेंट के पास पावर्स ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज करें।
और अगर कोई किसी से आप शिक्षा का अधिकार, रेसिडेंस का अधिकार छीन रहे हो, तो आप आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। तो इसमें भी ये कहते हैं कि आर्टिकल 30 इज इन अ लिमिटेड वे एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 22 प्रिवेंशन एंड डिटेंशन, अगर केंद्र सरकार चाहती है, टाड़ा था और कोई एक्ट थे, अगर केंद्र सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र में किसी को डिटेन कर दिया जाए तो वो कर सकती है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकती, क्योंकि प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एज पर आर्टिकल 22 इज नॉट एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि कोई टेररिस्ट को अरेस्ट नहीं करना है, तो उसको अरेस्ट नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार अरेस्ट नहीं कर सकती। आर्टिकल 7 सिटीजनशिप एक्ट, एक टाइम लिमिट थी, जो यहां से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस दोबारा हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, उनके लिए एक टाइम लिमिट थी, ये टाइम लिमिट हटा दी गई। मतलब कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन 1960 में अगर इंडिया आना चाहता है, तो पहले वो पीओजेके में जाए, फिर जम्मू एंड कश्मीर में आए, और फिर जम्मू एंड कश्मीर में आके हिंदुस्तान में कहीं पे भी रह सकता है, दंगा कर सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, जो हम कहते हैं ना मिलिटेंसी इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग के नीचे है, ये एक पूरी सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हर एक चीज का सिस्टम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके एक स्टेट सब्जेक्ट को कहता है कि आपको पीआरसी नहीं मिलेगा, और दूसरे को कहता है कि आप लोकसभा में वोट कर सकते हो, और अगर आप स्टेट सब्जेक्ट है तो विधानसभा में वोट नहीं कर सकते। बेसिकली आपने ये डिसाइड कर लिया कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी क्या रहेगी, यहां पे कौन रहेगा, कौन से रिलीजन के लोग रहेंगे और कौन से रिलीजन के लोग नहीं रहेंगे। और ये पावर्स, ऑटोनॉमी हम सारे समझते हैं, ये पावर्स उन्हें दी किसने? ये पावर्स उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के दी। आप किसी को इतना पावर देते हो कि आपकी बाजुएं काट ले, किसी को इतनी ऑटोनॉमी देते हो कि आपका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाए। जब आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव किया गया, इसमें एक समस्या थी, आई जस्ट टेक वन मोर मिनट, इसमें एक समस्या थी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्ड था, तो आर्टिकल 367 को इन्वोक करके ये उसमें चेंज किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थ्रू की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी रिप्लेस्ड टू लेजिस्लेटिव असेंबली, और क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन प्लेस, द पावर्स आर विद द गवर्नर, the powers are with the governor, and with recommendation of the governor and with the presidential order जिसने supersede किया presidential order 1954 को, we have got rid of article 35A, we have got rid of JK constitution, we have got rid of article 370 which is inoperative now. I hope I have covered the entire events of 1947 plebiscite and article 370. I think Abhimanyu ji, I am ready to take question and answers. Do you think the current government will make serious efforts towards taking POK back? But let me tell you this. I mentioned Parliament resolution on 24th February 1994, and it clearly says that we are committed to take POJK back. That's number one. Second point which I'll say is, हमें जो चीज करनी है उसे हम डंके की चोट पे कई बार नहीं कहते कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं करूंगा और फिर बात करूं. So that is what I will say. It is stupid to say I will do it. ये कोई हिंदी फिल्म नहीं है जैसे वो हीरो नहीं कहता मैं ये तारीख को इस जगह पे आऊंगा. ये वो बात नहीं है. जिस दिन हमें लेना है हम जरूर लेंगे. We do not lose territories because they belong to someone else today. We lose territories when we forget them. It's important that, and that is why this Sankalpa Divas, that every year we have to remind ourselves that POJK is legally part of India as per the instrument of accession. We have to remind ourselves that it is part of us. ये आज होगा. Would it happen before I die? I don't know. If it happens, great. If it happens before 2024, great. But one thing I can tell you, it is not about which government, Congress or BJP, because 20 February 1994 resolution, even Congress has voted for it. So I have safe reason to say, let it be any government. So your question is itself is invalid. Whether the BJP government will do or Congress government will do. Both parties are committed to take POJK back. Yes, that was in the news. And very importantly, that if we want to dilute the insurgency protection problem, means the locals are helping the insurgents, then we have changed the democracy in a positive manner. Other religions should occupy that. Means we need to, how could we, means is there any movement? Well, it's a very dangerous, I'll tell you why I would not agree with that statement. On one side,
we say that we are a democratic country with everyone is the state of the subject. And on the other side, Correct. if we say that we have to change the democracy to keep the state, we are contradicting ourselves. Our effort should be, no matter what the demography is, see, one thing is legal integration is done. As I said, ये पत्थर की लकीर है कि हिंदुस्तान का पार्ट है. अब सवाल ये है, लीगल इंटीग्रेशन के बाद क्या मनों का इंटीग्रेशन हो रहा है? क्या दिल से दिल जुड़ रहे हैं? और इसके लिए कोशिश लगातार होनी चाहिए और हो रही है. आप यकीन नहीं करोगे. I have videos of जो बॉर्डर पे स्कूल्स हैं, वहां पे लोग तिरंगा लहरा रहे हैं. आज श्रीनगर में तिरंगा रैली निकल रही है. काफी कुछ चेंज हुआ है. अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि कोई इंसिडेंट ये होता है एंड मेन स्ट्रीम मीडिया विल थ्रो इट ऑन योर फेस एंड हाईलाइट, oh, this is the story of Kashmir. This is not the story of Kashmir. Maharaja has said himself when Pakistan attacked in 1947, the state subject did not revolt. Yes, there was a section of army which revolted, but not entirely the state subject. So we should not run into this blatant argument of demography. This is what my point is. That also This is very, yeah, but this is very, I would say, this would weaken our position if we speak of democracy by retaining Jammu and Kashmir. Thanks for calling me. Thank you. Thank you.